अच्छा जी, हम काइनेमैटिक्स पे आखिरी वीडियो बना रहे हैं. दिस विल बी फ्रॉम क्वेश्चन 36 to question 39. Let's start. Question 36. A skydiver falls at terminal velocity. Terminal velocity meaning कि weight is equal to the air resistance and there is no resultant force. ठीक है ना? There is no resultant force. Which row gives the direction of the resultant force on the skydiver and the direction of the acceleration immediately after the parachute is opened. अच्छा जब parachute open हुआ है तो there comes a different story. ठीक है ना? When the parachute opens, वो जो surface area होता है ना उसका parachute का, it's like vastly bigger than the surface area of a person, right? So it becomes very large and the air resistance will be larger than the weight of the parachutist. So it will result in an upward resultant force और जिस तरफ को resultant force होती है उसी तरफ को acceleration होती है ये आपको पता ही होगा. I've told this many times. So D is the right answer. The graph shows how the speed of a car varies with time. What statement about the acceleration of the car between 10 seconds and 20 seconds is correct? अच्छा 10 मतलब यहाँ से पूछ रहा है 20. ठीक है ना 10 to 20. 10 to 20 आप नोटिस करेंगे there is no steepness in the graph and that there is no steepness in the curve, right? The straight line meaning that there is no acceleration, right? क्योंकि speed change नहीं हो रही. Accelerate कब होता है जब speed is increasing, right? There is no change in speed. That means कि आंसर है A, the acceleration decreases. B, the acceleration increases. C, the acceleration is constant but not zero. Acceleration, there is no acceleration. As you can see, there is a straight line which indicates there is no acceleration. क्योंकि ना ये जो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है that tells us the acceleration. और अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे ना it would be zero. So D, the acceleration is zero. D is the right answer. Question 36. A skydiver falls from rest through the air and reaches terminal velocity. What is the acceleration of the skydiver during his fall? अच्छा जब इनिशियली स्काई डाइवर ना जंप करता है ना ऑफ बिल्डिंग और ऑफ अ प्लेन तो उसका जो वेट होता है ना इज वास्टली ग्रेटर देन हिज एयर रेजिस्टेंस राइट लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे ही स्पीड्स अप ही एक्सेलरेट्स ही स्पीड्स अप एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस राइट एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है एंड इट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट तो आहिस्ता आहिस्ता जाके वो जीरो हो जाती है. So let's look at the answers. A. Constant at 0. नहीं गलत. B. Constant at 10. नहीं. एयर रेजिस्टेंस पे एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट करना है हमने क्योंकि ना एयर रेजिस्टेंस जब हम गिरते हैं ना तब एयर रेजिस्टेंस तो नहीं होती इतनी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज वी स्पीड अप द एयर रेजिस्टेंस एक्यूमुलेट्स और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है पुशिंग यू अप इन द अपर डायरेक्शन एंड evens out the force of weight. Question C, starting at 0 meters per second square and increasing to 10 meters per second square. No, it's the opposite. Question D, starting at 10 meters per second square and decreasing to 0 meter per second square. D is the right answer. Acha, so question 39, a car has stopped at a red light. When the light changes to green, the car begins to move with a constant acceleration. The graph represents this motion. Acha. ये हमने बताना है कि which quantity is plotted on the x-axis and which quantity is plotted on the y-axis. तो ना फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ये स्पीड टाइम ग्राफ का हो ही नहीं सकता स्पीड टाइम ग्राफ का होता ना स्पीड टाइम ग्राफ होता तो दिस इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस बिकॉज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट this is the acceleration time graph acceleration is constant and when acceleration is constant तो speed time graph जो होता है ना उसके ना हर इंटरवल के बाद हर टाइम पीरियड के बाद एक सेट अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज होती है सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है ना इट गिव्स आउट स्पीड तो अगर स्पीड इंक्रीज करिए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज करना चाहिए एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग सो in the y-axis there should be
distance, and in the x-axis there should be time. So C is the right answer.